जो ट्रस्ट है, X1 जो ऊपर हमने ऑर्गेनाइजेशनल, और फिर ये बाकी अनदर वेरिएबल। तो X1, X2, X3 एंड M, ये तो क्लियर है, हमने यहाँ भी लिस्ट किया है। तो ये क्या है बीच में, ये इसी तरह ये क्यों लिखते हैं? एंड व्हाट इज दिस? पहले इसकी तरफ आ जाए। ये अभी मैंने डिफाइन किया है। जब भी बिजनेस में इक्वेशन लिखी जाएगी उसमें स्टॉकेस्टिक वेरिएबल लाजमी होंगे। कोई भी रिलेशनशिप परफेक्ट नहीं, कोई फैक्टर्स और भी लाजमी एग्जिस्ट करते हैं समवेयर इन सम फॉर्मेट, वेदर क्वांटिफाइबल वेदर नॉट क्वांटिफाइबल, बट दे डू एग्जिस्ट, दे डू इफेक्ट एम। तो इसलिए हम ये तो डालेंगे आइदर इन म्यू और एप्सिलॉन, ये नाम है ग्रीक साइंटिफिक नोटेशन है सारी। तो ये इनको हम लिखते हैं। लेकिन ये क्या है, वेरिएबल्स तो हमने किए, ये बीच में क्या आ गया, ये अल्फा, इसको अल्फा कहते हैं, अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3। ये जो अल्फा जो क्रिएचर है ये एग्जिस्ट करती है रियल लाइफ में। अगर ये एग्जिस्ट ना करती तो ये एक्सेल ने टाइप नहीं करना था। मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए मैं लिखूंगा ALPHA और इसको मैं कहता हूँ टाइप कर दिया। इसी तरह मैं इसको कहता हूँ 0, तो इसने सिंबल लगा दिया। उसके बाद मैं इसको प्लस करता हूँ। उसके बाद अल्फा 1, अगेन आई टाइप अल्फा ALPHA \अल्फा। PhD में आपको हर चीज़ खुद करनी है, किसी से कोई लिखवाना नहीं है, कि कहीं से कोई पिक्चर क्रॉप करके नहीं लिखनी, ठीक है, टाइप करनी। ये सॉफ्टवेयर अगर लिख रहा है तो इसका मतलब है इसमें ये फैसिलिटी मौजूद है। सर लोग ऐसे करते हैं अल्फा_1 and then x1 x_1 x1. So this is how this equation has been written and typed. ये इसको कैसे लिखा है, इक्वेशन कैसे लिखते हैं वैसे एज ए फुटनोट नॉलेज वर्ड में इक्वेशन ये टाइप करना आसान मुश्किल तो नहीं। इसने वो फाइन किया था आरडीओ को। हाँ वो तो खैर वो तो अगर आपको टाइप ना करना आता तो हेल्प होती है साथ साथ वहाँ से आप, लेकिन वो देर लगती है। इसी तरह अगर आप इसके साथ लिखना चाहते हैं बीटा, ये बैकस्लैश ये कोई ऐसी चीज नहीं है जो एग्जिस्ट नहीं करती और हमने डाल दी है, इसलिए परेशानी वाली तो बात नहीं होनी चाहिए। तो बारह ये आपको शो हो रहा है जो मैं टाइप कर रहा था। हाँ जी। तो ये क्या है, ये क्यों लिखते हैं? वेरिएबल्स तो वो हैं तो अल्फा नॉट, ये कैसे आ गए? तो अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स में जब हम कहते हैं मॉडल एस्टिमेशन, तो इट इज नॉट द एस्टिमेशन ऑफ m, इट इज नॉट द एस्टिमेशन ऑफ x1, नॉट एस्टिमेशन ऑफ x2, क्योंकि इनका तो डेटा आपने खुद इकट्ठा किया होगा, इनका तो देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ एस्टिमेटिंग x1 x2, उसी का तो डेटा आप इकट्ठा करते हैं, कंडक्टिंग सर्वे, आस्किंग क्वेश्चंस, राइटिंग आइटम्स एंड देन गिविंग लिकर स्केल और अदर स्केल, उसके नंबर तो आपके पास आ चुके होते हैं। तो फिर ये तो एक्चुअली व्हेन यू आर एस्टिमेटिंग अ मॉडल, इन फैक्ट यू आर एस्टिमेटिंग these coefficients. याद रखें। तो अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स में हम क्या करते हैं, when you are estimating a model, in fact you are estimating coefficients, and coefficients क्या शो करते हैं, तो टेक्निकल वर्ड हो गया। तो बेसिकली we are estimating the extent of relationship, cause and effect. इनके नंबर्स को हम इंटरप्रेट करते हैं, what is the extent of relationship। आगे हम करेंगे, आगे भी सॉफ्टवेयर एक्सेल जो कोई SPSS यूज करके अभी हम करेंगे।
तो अभी तक हमने क्या डिस्कस किया, मॉडल थ्योरी के नॉलेज की बेस पे मॉडल बनाते कैसे हैं, और ये किसके सिंपल मॉडल हो सकता है, सिंपल इक्वेशन, इट कैन बी मीडिएटिंग मॉडल जैसे हमने यहाँ पे किया है, और एक और चीज़ है जिसको हम कहते हैं मॉडरेटिंग मॉडल। मॉडरेशन डेली लाइफ में मॉडरेशन किसे कहते हैं? Make report, how to generate report based on the values of these alpha, alpha 1, alpha 2. अच्छा, इसमें चलें, ये तो इसकी तो सेंस बनती है कि अल्फा 1 जो है वो हमें शो करेगा एक्सटेंट ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन x1 एंड m, x2 हमें शो करेगा, अल्फा 2 शो करेगा दी एक्सटेंट ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन x2 एंड m, और अल्फा 3 शो करेगा एक्सटेंट ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन x3 एंड m। जो कोई नंबर आएगा तो फिर हम उसको इंटरप्रेट करेंगे। अभी यहाँ पे इतना याद रखना है कि ये हर कोएफिशिएंट उसके वेरिएबल को dv के साथ रिलेट करके बता रहा है कि व्हाट इज द एक्सटेंट ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन x3 एंड m। अभी ये शो कर रहा है, लेकिन इसकी क्या वर्थ है, ये जो हमने डाला है इसके साथ तो कोई वेरिएबल नहीं है। दिस इज नोन एज इंटरसेप्ट, ठीक है, कांस्टेंट या इंटरसेप्ट इसको कहते हैं। इंटरसेप्ट को क्यों डालते हैं बिजनेस की इक्वेशन में, इंटरसेप्ट का क्या रोल है? Sometimes it gives just capital asset versus model में there is no intercept. When we add intercept it has certain meaning. आगे आएगी एग्जांपल उसमें मैं समझाऊंगा। लेकिन generally intercept is to be included to produce unbiased results. To produce unbiased results. Intercept अगर आपकी इक्वेशन में नहीं भी है तो आपने खुद ऐड करना है in order to produce unbiased results. Intercept is to be added. Recording को recording sorry, मैं समझा दूं फिर मैं तक शॉर्ट हो जाएगी। शॉर्ट हो जाएगी सर, मैं इसको सम अप करूंगा, रिवाइज करूंगा, तो रिवीजन में फिर वो शॉर्ट हो जाएगा, ये बहुत सारी वो लंबी रिकॉर्डिंग हो जाएगी। तो ये हो गया। अच्छा, इसी तरह अब यहाँ पे हमने अल्फा की बजाय बीटा यूज कर दी। जी सर। ऐसा क्यों करते हैं, एक ही सिंबल क्यों नहीं यूज करते? सर एक तो अल्फा तो एक्सेस है, बीटा रिस्क है। In order to differentiate the two equations. तो ये जो है ये negating equation है and this is इसको अंदर बुला दो सारे। सर जिला करो पूछ लीजिए। Similarly, it is a matter of symbol only. Just to differentiate one equation from the other. Just to differentiate one equation from the other. ये इसका। अच्छा, अब अगर आपने मीडिएशन मॉडल एस्टिमेट करना है, आप देखें, आप जरा टाइम नोट करें कि ये इक्वेशन लिखने में आपको कितना टाइम लगेगा और इसको बनाने में कितना टाइम लगेगा। इससे आप बहुत सारी चीजें एक्सप्लेन कर सकते हैं, यहाँ से कुछ नहीं कर सकते। तो क्यों नहीं इसको करें हम? ये आसान है। सिर्फ एक अब आज से मेरी बात याद रखें, when you are estimating mediating model, mediation की इक्वेशन बनेगी mediating variable and on the right hand side all independent variables x1 x2 x3 x10, कोई मसला नहीं। जब आपने फाइनल इक्वेशन बनेगी दो बनेगी, दो इक्वेशन, because there are two parts, एक ये है और एक ये है, so that is why two equations, जितने पार्ट होते हैं उतनी इक्वेशन होती है, तो दो इक्वेशन बनेगी, एक फाइनल इक्वेशन ये बनेगी जिसमें ऑल इंडिपेंडेंट वेरिएबल, क्योंकि डायरेक्ट इफेक्ट का ये देखें, एक एरो जो है वो इधर से आ रहा है, these arrows are meaningful, so this diagram is important from this perspective। ये एरो आप इधर नहीं कर सकते because it has certain meanings। तो एक एरो, this arrow is coming from here to y and another path is coming this way। Yes sir। इसके अंदर तीन वेरिएबल्स का इफेक्ट इसके अंदर है, वाया दिस इट इज इफेक्टिंग वाई, और एक इसका, दैट इज वाई यहाँ तक इक्वेशन सेम है। ऊपर देखें आप x1 x2 x3, दिस m
डिटरमिन फ्रॉम हेयर, ये यहाँ पे आ जाएगी। तो ये कंप्लीट मीडिएशन मॉडल है विद टू इक्वेशंस। सर ये तो पूरा ऐसे करके आपने बनाया सर, वो जो इंडिपेंडेंट जो है उसका डिपेंडेंट पे फिर अलग एक इक्वेशन ही सर मीडिएटर की और इसकी। एम के अंदर Yes, sir. इन तीनों का इफेक्ट मौजूद है। अच्छा, तो सर फिर ये डायरेक्ट ओनली वन और ये फिर बी बीटा x1 और ये ना हो सर? क्या सॉरी दोबारा? सर ये जो डायरेक्ट मीडिएटर है सर, इसका इन्फ्लुएंस इसके ऊपर जो है y के Y के ऊपर ऊपर। सर, इसकी इक्वेशन नहीं है सर? इसकी अलग से यस सर। 3 स्टेप्स में आपसे ही कह रहे हैं, सॉफ्टवेयर 3 स्टेप में करेगा। सॉफ्टवेयर 3 स्टेप्स में करेगा। अगर वो सॉफ्टवेयर 3 स्टेप्स में करता है ना, यस सर। फिर जो कोएफिशिएंट यहाँ पे होगा उसको इसके साथ मल्टीप्लाई आप करेंगे, खुद करना पड़ेगा। यस सर। आप सही कह रहे हैं, वो फिर आपको इसके साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसके तमाम कोएफिशिएंट्स को। यस सर। सर क्योंकि वो एक इंडिपेंडेंट आप ले रहे हैं और फिर आप उसको उसके ऊपर डाल रहे हैं, तो वो फिर एक अलग इक्वेशन बनती है सर। जी बिल्कुल, ये सॉफ्टवेयर एस्टिमेशन करेगा, लेकिन जब आप इंटरप्रिटेशन करते हैं ना, एक फाइनल इक्वेशन बनाते हैं, यस सर। फाइनल इक्वेशन बनाते हैं, तो वो ये बनेगी। इसके अंदर बहुत सारे इसके मीनिंग्स हैं। फिर जब Yes, हम sir. इसको एक्चुअल एस्टिमेशन करेंगे, फिर इससे हम कंपेयर करके मैं आपको दिखाऊंगा कि हमने ये इक्वेशन बनाई कि सॉफ्टवेयर इसको कैसे समझता है और शॉर्ट फॉर्मेट उसका क्या है। वो ये- यस सर। अब सर ये पूरी कंप्लीट है सर, हाँ। इंडिपेंडेंट, मीडिएटर और फिर डिपेंडेंट। बिल्कुल। यस। इसलिए इसकी नीचे मैंने आपके नोट्स के लिए ना ये इंटरप्रिटेशन लिखी है। ये हर एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल का डायरेक्ट इम्पैक्ट है फ्रॉम द सेकंड इक्वेशन, और मीडिएटेड इफेक्ट बीटा 4। ठीक है, वो कंबाइंड मीडिएटेड इफेक्ट, जब हमने मीडिएटेड इफेक्ट कह दिया ना, तो उस मीडिएशन में 3 सोर्सेज हैं, x1 x2 x3। ठीक है, तो ये इस तरह से हम फिर इसकी इंटरप्रिटेशन ऐसे करते हैं। अब इससे थोड़ा एडवांस है, अब इसके अंदर मॉडरेटिंग, मीडिएशन और मॉडरेशन दोनों। सबसे पहले डिफाइन व्हाट इज, कौन से वेरिएबल ले रहे हैं। वी आर कंसीडरिंग ट्रस्ट एज अ मीडिएटिंग वेरिएबल एंड एम्प्लॉयर टेन्योर एज अ मॉडरेटिंग वेरिएबल। Tenure mean how long the employee has been on this job. Generally जो internationally इसको tenure को हम कहते हैं 10 साल, 10 साल से कम या 10 साल से ज़्यादा। पाकिस्तान में जो हायर एजुकेशन कमीशन जो डिफाइन करता है tenure ट्रैक सिस्टम आपने सुना होगा, TTS। तो tenure ट्रैक में एक्चुअली tenure is for 10 years। 10 साल के बाद वो एम्प्लॉय परमानेंट हुआ। आफ्टर एवरी 3 years देयर इज असेसमेंट ऑफ द परफॉर्मेंस, एंड आफ्टर 3 assessments the professor is tenured, the faculty is tenured। Tenured means now he is on this job Confirm. at least for the last 10 years। तो ये इस तरह से हम, तो बहरहाल अब टेन्योर को हम मीडिएटिंग मॉडरेटिंग वेरिएबल ले रहे हैं। तो अब ये देखें कि क्या ये जो ऊपर वाला रिलेशनशिप है जो अभी हमने डिस्कस किया, will this relationship be the same for those who are on this current job for the last 10 years, less than 10 years, more than 10 years? Definitely not. कुछ लोग fed up हो जाते हैं, they don't care about this relationship, they want to quit the current job because they have been very much with this organization. They enjoy being associated with this job, this organization. They want to contribute more. They want to
pay back more because they are receiving more. तो ये इसका इफेक्ट है। तो इसका मतलब ये जो हम बात कर रहे हैं इसको कहते हैं this is something, यानी tenure is a variable या something because of which the relationship either weakens और employee जो है वो quit कर जाता है और it strengthens. This is the definition of moderating variable. Basically strength and direction. It strengthens the relationship of independent variables and the dependent variable, and sometimes it weakens the relationship. So both the options are there. तो अगर आप ये देखना चाहते हैं, this makes your model a bit advanced, and this is the requirement at the PhD level. अब इसमें जब और मैथमेटिक्स में पहले ग्राफ है क्योंकि अगर यहाँ पे ये x1 है, x2 है, x3 है, ये 3 वेरिएबल्स हैं और यहाँ पे एक y वेरिएबल है जिसको d भी कह रहे हैं। अगर सिर्फ एक मॉडरेटिंग वेरिएबल हो तो वो इधर भी लिख सकते हैं, इधर भी लिख सकते हैं। इट इज हमने टेन्योर कहा है। So arrow, as I mentioned earlier, is meaningful. If your arrow goes like this, it means this is the variable which you consider as a moderate. Either its presence will strengthen the relationship between x1, x2, x3 and y, or it will weaken the relationship. इसको moderating variable कहते हैं। तो mediating क्या है? ये mediating है। Mediating. This is moderating. और अगर ये ऐसे भी मॉडल हैं पीएचडी में तो मैं आपके साथ शेयर करूंगा लिस्ट ऑफ 80 पॉसिबल मॉडल जो मैनेजमेंट साइंसेज में हो सकते हैं। ये मीडिएटिंग वेरिएबल है। हम W से जनरली जो सॉफ्टवेयर है वो W मॉडरेटिंग वेरिएबल के लिए सिंबल यूज करते हैं। वी आर यूजिंग सिंबल एंड Y इज so these इंडिपेंडेंट वेरिएबल डू इफेक्ट M और ये इसको इफेक्ट कर रहा है। ये इसका डायरेक्ट इफेक्ट है। Yes sir. अब ये आपका एम्पिरिकल एविडेंस बताएगा जो लिटरेचर रिव्यू किया है कि क्या ये इस पाथ को मॉडरेट करता है या इस पाथ को मॉडरेट करता है या तीनों को करता है। इंशाल्लाह I will share with you 80 possible models. उसको जरा बैठ के तसल्ली से आपने देखना है और फिर अपना बनाने हैं जो अपने पीएचडी का प्रोसेस है उसको अपने पास रखें जब तक पीएचडी नहीं हो जाती और फिर उसके बाद भी रखें सर्च पेपर भी जैसे वो अभी जो आप कॉम्प्रिहेंसिव में हमने दिया उसमें ये जो ये पार्ट था हाँ जी ये कर रहा था बट वो नहीं कर रहे थे तुम उस केस में तो सर ये सिग्निफिकेंस इसकी मतलब उतनी ही है डब्ल्यू की मतलब अगर ओवरऑल उस वेरिएबल की बात करें दो जो मॉडरेटर में इसकी डायरेक्ट मॉडरेटर इनके अपने अपने मीनिंग्स हैं। ये थ्योरी में ये जितने आप ये एरोज जितने ऐड करते जाएंगे उतना आपकी रिसर्च की वैल्यू बढ़ती है, पब्लिकेशन आसान होती है, थीसिस जल्दी होता है। हाँ इसलिए हमने इस क्लास में लास्ट टाइम हमने नहीं किया था, बाद में जाकर किया था। तो इसलिए स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि वो बहुत सारे थीसिस डिफेंस देखे तो उसमें काफ़ी प्रॉब्लम्स थे। क्यों ना हम अभी से इसको ठीक कर लें। अब दे हैव सर्टेन मीनिंग। दिस इज सिंपल मॉडरेशन बिटवीन आईवी एंड वीवी। Yes sir. दिस इज नॉट सिंपल मॉडरेशन। ये मीडिएशन है और यहाँ मॉडरेशन है। दिस इज नोन एज मॉडरेटेड मीडिएशन। Moderated, this mediation has been moderated by another variable. और ये यहाँ भी हो सकता है moderated mediation again, but double moderation. ये यहाँ से जैसे मैंने बताया कि ये इधर भी हो सकता है। इनकी मैथमेटिकल इक्वेशन बहुत सारी बनती है, जितने पाथ होते हैं उसमें सॉफ्टवेयर जब एस्टिमेशन करता है तो हर पाथ की इक्वेशन एस्टिमेट कर देता है।
फिर हमने हर एक का एनालिसिस करना होता है। तो कीपिंग इन व्यू द न्यू चैलेंजेस इन रिसर्च and then recognizing the importance of mediation and moderation, there can be a possibility of simple mediation model, वो जो हमने किया है, can be simple moderation, ये जैसे है, can be moderated mediation, double moderation, और अभी जो कम्प्रिहेंसिव में दिया था वो भी मैं बना देता हूँ। वो था, ये नोट कर दिया आपने? जी यस सर। ये भी हो सकता है कि x1, x2 सिंपल दो वेरिएबल्स है। This leads to x3, this leads to m, and this leads to y. This is known as sequential mediation. और ये डायरेक्ट इफेक्ट है इसका। कुछ ऐसे भी मॉडल्स आपको करने पड़ेंगे, और जितना ये आप बड़ी आसानी से कर सकते हैं कि दिस इज x1 and y, and there is another variable, suppose x2, direct effect, and there is another variable, suppose this is m1, x2, या इसका m2 करते हैं ताकि we are using m for mediation। Mediation to mediation. ये भी हो सकता है कि यहाँ पे m3, Yes sir. then y, यहाँ पे m4, Or this is known as parallel mediation। ये सारी एग्जांपल्स हम करेंगे विद रियल डेटा। प्रॉब्लम कहाँ आती है? प्रॉब्लम ये आती है कि स्टूडेंट्स जब थीसिस स्टेज पे आते हैं, लिटरेचर में पढ़ते हैं कि मीडिएशन, अच्छा ये एक देयर इज अ सेट ऑफ लिटरेचर व्हिच सपोर्ट्स m1 as a mediating variable, there is another set of variables supports m3 as a mediating, m3 can be any variable, there is set of literature which supports m2 as a mediating variable, so एक भरा हुआ लिटरेचर, so why not to use all those mediating variables not separately but together using the parallel mediation model? That increases the importance of your research. That improves the significance of your research. और उसकी publication, उसकी acceptability, thesis के ऊपर comments अच्छे आते हैं। तो इसमें कोई परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। आपने उस आइडिया को कैप्चर करना है, डिस्प्ले करना है, बाकी तो सॉफ्टवेयर में हो जाता है, हम आपको सिखाएंगे इस कोर्स में। इसमें कौन सी मुश्किल बात है? डॉक्टर आयशा को पता है, हमारी स्टूडेंट हैं, पिछले 6 महीने से वो बहस लगा रही हैं, उनको समझाया कि ये अंडर ग्रेड लेवल है कि आप एक मीडिएशन ले रही हैं और एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल ले रही हैं, और उसको समझा हम थक गए कि ये दिस डज नॉट मीट द मेरिट ऑफ PhD लेवल।
तो हमको सजेशन भी दे दिए तो भी वो कन्विंस नहीं हो रही है। नहीं, वो कहती है ये तो कहीं है ही नहीं, आज तक हुआ ही नहीं है। उसको भी वो क्लास लगे जो आपको क्लास लेक्चर दिया था, वो मीडिएटेड मॉडरेटेड मीडिएशन का वो दिखाया कि ये कहती नहीं तो किताबों में आगे ये देखो एस्टिमेट किया तेरे सामने। मीन सर कॉम्प्लिकेटेड होना चाहिए। देखने में लगे कि हमने कुछ काम किया। तो इसमें कोई परेशानी वाली घबराने वाली बात नहीं है। तो मेरा ख्याल है कि हमने sufficiently covered the example of, अच्छा इसको मैं social exchange theory. So in social exchange theory, initially we considered three variables in a simple model: trust, organizational support, equity as list of independent variable, and job satisfaction as the dependent variable. This is a very simple model. The estimation is very simple. Simple linear regression model can be, simple linear regression method can be used to estimate this relationship. Now mu is used as an additional variable which covers the stochastic perspective of the variables. The stochastic nature, there are certain variables which are either not quantifiable or they are quantifiable but their quantity is so small that we cannot consider them for the model, but their impact is there. That is why in order to complete the business model we need to incorporate another variable from our own which represents such variable stochastic in nature. Now this, if you are estimating this for the purpose of learning, this is good enough. But if you plan to publish it, obviously you cannot publish it in good journals. And now HEC has changed its classification of the journal as well, so it has become hard to publish papers. And the requirement again has changed now. Because you are getting admission after 2023 policy, your requirement of publication is X or above, X category and above, or W category and above. So that is why you need to learn how to make an advanced model or a complicated model. Using the same social exchange theory, now we are using symbols, so there are different ways to write equation. Either you can use symbol Y for the dependent variable x1, x2, x3 for the independent variable, M for mediating variable, and W is generally used for the moderating variable. But you can also use the abbreviation. So both the practices are there. Dependent variable is organizational commitment. Our independent variables list includes perceived organizational support, job satisfaction, work-life balance. These three variables considered as independent variable. And then we are introducing here another variable, trust in management, which is incorporated here as a mediating variable. Now the qualification of mediating variable is that it performs the functions of both dependent and the independent variable. With reference to x1, x2, x3, M or trust in management will be considered as a dependent variable. And with reference to Y, the final dependent variable, it is considered as a independent variable. That is why we say that mediating variable is such that it fulfills the requirement of both dependent with reference to independent variable and independent with reference to the final response variable. When you are estimating this model, the effects are divided into two categories: direct effect and the indirect effect. Direct effect is measured by the path which is from independent variables to final response variable, and the path which is via mediating variable, that measures the indirect effect. So generally, in order to calculate the indirect effect, since a mediating path is divided into two, one part determines its qualification as a dependent, the other part determines it as a independent variable. So there are two paths. So the product of these two paths or these two coefficients is generally known as the indirect effect. तो ये mediating variable में हम ऐसा करते हैं. उसके बाद इसकी interpretation हम करते हैं. We interpret all the betas
beta 4, since beta 4 is associated with the mediating effect from x1, x2, x3, so if beta 4 is significant, the mediating effect is significant. So there is significant mediation. So generally when beta 4 becomes significant, the direct effect is reduced in size. So then some other concept of partial mediation, full mediation, ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे इसमें होता है. तो generally full mediation is when direct effect almost becomes insignificant, when beta 4 becomes significant, or when the indirect effect becomes significant and indirect effect also the direct effect also remains significant, then we call it partial mediation, but we will have more discussion on it later on. So this is brief introduction, the interpretation. Then a bit more advanced model wherein we are introducing both the mediating variable and the moderating variable. Now, if the moderation is only on the direct path, this is known as simple moderation. But if the moderating variable is affecting the path which indicates the indirect effect, two arrows, then it is known as moderated mediation, because the moderating variable is affecting the indirect path. So that is why it is known as moderated mediation. But remember, this video is being recorded. There is no, I repeat, there is no mediated moderation. This is a big error which generally the students of management sciences do. There is no mediated moderation. There is moderated mediation. I will give you the reference as well. Okay. Andrew Hayes' book, recently published in 2024. There is a discussion on it. He intentionally raises the question, is there any mediated moderation? And he discusses all the possibilities. There is no, and logically there should not be any mediated moderation. Moderated mediation is there. So जब हम इसको, when we incorporate another variable as a moderation, so mathematically when there is a moderating variable, since the moderating variable is defined as the one which either strengthens the relationship between IVs and DV, or it weakens the relationship between IVs and DV. So it is some variable which actually change the structure of relationship. What's the Moderating variable. Yeah, so generally in mathematical term we write it in product form. Moderating variable हमेशा product form में होता है, interactive, because it is either weakening or strengthening, so it plays the role of interactive variable. So interaction generally is mathematically written in product form, multiplied by. So that is why this is m multiplied by w. So when it is written like this, m multiplied by w, it is moderated mediation. And then the interpretation as usual, if significant, if the path of the moderating variable is significant, there is strong moderation. If the path of mediation is significant, there is indirect effect dominating the direct effect. And if all the paths are significant, then perhaps the moderation is significant, the mediation is significant, and even the direct effect is significant. But such effects, if exist significant, is going to be a unique contribution in research. This does not happen. This is all about the example from HRM. Now we are moving to examples from finance. Finance of the pricing model, where there are 4 leading variables: one risk-free rate, the other beta, third
marketing return, and the fourth one is the dependent variable, which is the required rate of return or expected return of a security. The expected return here for the first model we are using RA symbol, expected return. Expected return, for example, if we consider best way cement as a security. So the price quoted in the stock market and then computing the natural log of the prices, multiplying it by 100 gives us the return, which is the true method of calculating the return. So generally in the textbooks we calculate return by taking second price minus first price divided by first price multiplied by 100. That is also a method, but that if you are conducting research, and research is you are using a big sample. In a big sample, you should use the method because all the finance variables related to stock market, they are continuous in nature. So when you are calculating return, instead of using P2 minus P1 divided by P1, this formula, preferably you should use natural log of P2 over P1 times 100. That gives you the correct measurement of return. Otherwise, the definition of continuous variable breaks from the definition. You are violating the definition. If you are conducting research, you are using a long series, sample size is big, and every time you are applying the formula delta P divided by P1 multiplied by 100. This actually converts a continuous variable to a step function. It should not be the case. So this is wrong. तो ये है इसका ख्याल रखें। अच्छा, अब इसका ये generally this is the equation, the mathematical equation of capital asset pricing model, because there is no mu, we have already discussed. But there are so many factors in stock market affecting the return. It is not only beta, it is not only market performance, there are so many other performance indicators. Inside trading, speculation, rumors, government policies, and fluctuation in the exchange rate of Pakistan with reference to leading economies, leading currencies, etc. Well, there's a long list. So in order to cover, if you are estimating simple capital asset pricing model, you need to add one more variable, which is known as stochastic variables. अब इसमें देखें कि this is simple mathematical equation based on CAPM. RF is risk-free rate. Risk-free rate generally is considered a T-bill rate या policy rate. T-bill यानी treasury bill rate जो government bond issue करती है in the financial market, which includes commercial banks. जैसे पाकिस्तानी government जो है आजकल borrow कर रही है from the commercial banks by issuing T-bills, treasury bills. तो उसके ऊपर जो रेट बिडिंग में डिसाइड होता है, that is known as the risk-free rate. But these days, since SkyBar is a dynamic concept of the fluctuation in the rate, so SkyBar Karachi interbank offer rate can also be used as a proxy for the risk-free rate. And similarly, some other policy rate भी हो सकता है, या even bond yield can also be used as a risk-free rate. Bond yield from the international market, investing.com पे जो पाकिस्तानी bond के ऊपर report हो रहे हैं, but that is actually depends upon the objective of the study. Well, the point is, this is a mathematical equation representing CAPM, and we first need to convert it to a statistical or econometric equation. कैसे करेंगे इसको? हम simplify करते हैं. Simplify कैसे? RF we transpose RF, तो ये ऐसे हो गया. ये इधर आप देखें, there is no, ये mu has been added to make a statistical equation, but still alpha या intercept अभी तक इसमें include नहीं हुआ. So if we estimate this equation, if we estimate CAPM by using this equation, the results will be biased. In order to avoid the biasness in our results, we need to transform it to this type of equation. ये जैसे ये हमने बनाई है. Now this is complete equation. इसको हम econometric equation कहते हैं. इसमें हमने alpha, which is not part of the original CAPM, but for statistical requirement we added. Mu, which is not part of the original CAPM, but there are certain observations, concepts,
स्पेकुलेटिव फैक्टर्स आर देयर अफेक्टिंग द रिलेशनशिप, तो इसलिए हमने इसको डाल दिया स्टॉकेस्टिक वेरिएबल के तौर पे। ये सिंपल मॉडल है फाइनेंस का जिसको हम एस्टिमेट करते हैं। नाउ आफ्टर गैदरिंग डेटा ऑन रिटर्न्स, फॉर एग्जांपल आपको OGTCL or any other stock, and then KIC 100 can be used as a market index, as a proxy for the market index. KIC 100, because if more than 100 companies are listed in the stock market, KIC 100 is not the only market representative, but it is not the actual market index, but it can be considered as a representative or a proxy for the मार्केट इंडेक्स, तो उसको हम ये उसका रिटर्न कैलकुलेट करके हम डालते हैं। तो इट इज सिंपली सिंप्लीफिकेशन ऑफ द कैपिंग इक्वेशन, जिसको हमने ये RI के लिए हमने ये जो कैपिटल RI इज द इंडिविजुअल सिक्योरिटी रिटर्न, RF इज द रिस्क फ्री रेट, इनका डिफरेंस लेते हैं जो दिस स्मॉल r हम यूज़ करते हैं। सिंबल कोई भी यूज़ कर सकते हैं एस्टिमेशन के लिए। उसके बाद हम अब इसमें फाइनेंस में इसी तरह HRM में भी कहीं ना कहीं यकीनन होगा, कोई ऐसी थ्योरी आई नहीं जिसमें पहले से। अब कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल के मुताबिक एफिशिएंसी हाइपोथेसिस को अगर हम कंसीडर करें तो आइडियली द वैल्यू ऑफ बीटा इज 1 परफेक्ट एफिशिएंट मार्केट इक्वल टू 1। तो ये सारा एनालिसिस फिर इसके अराउंड होगा, तो टी स्टैट्स और सारी चीजें वो इसके अराउंड होंगी। अगर कोई नहीं करता तो वो कैपिटल को गलत एस्टिमेट करता है। दिस नीड्स टू बी इनकॉर्पोरेटेड, दिस नीड्स टू बी कंसीडर्ड व्हाइल एस्टिमेटिंग एनी एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस। अब ये दिस वाज अ सिंपल मॉडल। नाउ मूविंग ऑन टू द एडवांस लेवल मॉडल, हियर we are considering 4 independent variables affecting the dependent variable expected return of an asset, market return, risk-free rate, firm size, book to market ratio, and then this CAPM gets complicated when सब में तकरीबन इसकी application possible। तो dependent variable is purchase intention, independent variable 4 we are considering attitude toward the product, subjective norms, for example influence of the social pressure or the opinions of the others on the consumer decision making। बहुत आम सा एक कॉन्सेप्ट है। इसको क्लॉथिंग में खास तौर पे बहुत ज़्यादा है, और मल्टीपल थिंग्स विच वी आर परचेजिंग फॉर आवर डेली लाइफ। And perceived behavioral control, for example, consumers perceived ease or difficulty in making purchase. So product quality perception, consumer, how does the consumer perceive quality of a product, and then the model can brand trust as a mediating variable and the moderating variable price sensitivity। उसी तरह फिर ये मॉडल आगे बन जाएंगे इस तरह से। So by repeating the similar ideas across 3 areas of specialization, I hope this should be helpful. Yes, sir. How to make model from theory, how to write a mathematical equation, and how to write a advanced statistical या econometric equation. उसके बाद correlation we have already done. हम यहाँ पे क्वेश्चन आंसर के लिए ब्रेक करेंगे। Recording stopped. जी, कोई क्वेश्चन अभी तक कोई है? अच्छा, अब आप करेंगे क्या? आप कोई अपना कोई मॉडल अज्यूम करें जिसमें एटलीस्ट 2-3 वेरिएबल्स लें, एक मीडिएटिंग वेरिएबल, एक मॉडरेटिंग वेरिएबल। पहले एक सिंपल बनाएं, फिर मीडिएटिंग के साथ बनाएं, फिर मॉडरेशन, सिंपल मॉडरेशन के साथ विदाउट मीडिएशन। पहले ये बनाएं, ये मुझे दिखाएंगे आप बना अपने अपने एरिया में। मुझे वो नहीं समझ आ रही, तो अल्फा ऐड करते हैं तो अनबायस्ड कैसे होता है? कैसे? ये जब एस्टिमेशन करूँगा ना मैं फिर आपको वैसे मैं जनरली ये वाकई ये किसी ने पूछा ही नहीं। अनबायस्ड देखें, जो स्टोकेस्टिक वेरिएबल है ना जिसको म्यू कहते हैं, क्योंकि उसके पॉजिटिव और उसके नेगेटिव हैपनिंग्स
इक्वल प्रोबेबिलिटी है। ठीक। तो अगर उसकी वैल्यूज आ गई हैं आपके पास तो उसका सम या एवरेज जीरो होना चाहिए, क्योंकि पॉजिटिव जितने पॉजिटिव के चांसेस हैं उतने नेगेटिव के चांसेस हैं, तो म्यू का सम जो है वो नीचे जीरो आना चाहिए। लेकिन अगर आपके मॉडल में जो आपने रिग्रेशन इक्वेशन एस्टिमेट की है उसमें अल्फा नहीं है तो वो जीरो नहीं होगा। अल्फा नहीं है अगर अल्फा मॉडल में नहीं डाला, अगर इंटरसेप्ट नहीं डाला ना, इंटरसेप्ट, हाँ तो वो तो म्यू का सम जो है या एवरेज है वो जीरो नहीं होगा। इसका मतलब है कि आपके मॉडल में तो आपने स्टोकेस्टिक वेरिएबल को जैसे कॉन्स्टिट्यूशन को रीराइट कर जी दिया, जी 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 सर, और एग्जैक्टली आपने अपनी डेफिनेशन दे दी कि ये तो पॉजिटिव नेगेटिव बराबर नहीं है, तो जब चांसेस एक जैसे नहीं है तो हाउ कैन यू कॉल इट रैंडम। जब प्रोबेबिलिटी एक जैसी असाइनमेंट है तो हाउ कैन यू कॉल इट रैंडम। तो बेसिकली थोड़ी गहरी बात है, हाँ, नहीं, लेकिन वो सोच रही हूँ कैलकुलेशन उसका। जब करते हैं तो वो ऐसा देखते हैं हम। अच्छा, ठीक। सर जो इंटरसेप्ट है आपका ओवरऑल, मतलब अगर उसको आप सोचें, म्यू आपके वो वेरिएबल है जो आप मेजर नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप कह रहे हैं कि उनकी प्लस माइनस वो बात भी समझ आ रही है, तो फिर इसका भी तो कोई, फिर इसका मतलब है कुछ ना कुछ इफेक्ट। अल्फा का हाँ सर, अल्फा का हर थ्योरी में नहीं होता, कुछ थ्योरीज में लेते हैं। जैसे हम आम तौर पे कैपन की जब एडवांस लेवल का एस्टिमेशन करते हैं प्रैक्टिकल, तो ओरिजिनल कैपन में वो नहीं है, लेकिन जब वो उसके देखें ना आर एफ उसका इंटरसेप्ट के तौर पर शो हो रहा होता है, ये इक्वेशन में कैपन में जी जी सर, ठीक है। आर आई जी, इक्वल जी, टू जी। आर हाँ, इंटरसेप्ट, तो हम आमतौर पे उस इंटरसेप्ट को ना उससे कंपेयर करते हैं। बेसिकली सर वो भी फिक्स्ड है और ये भी फिक्स्ड है, इसलिए भी हम जी, उसके एस्टिमेशन जब हम करते हैं ना तो हम ये देखते हैं कि क्या हमारी एस्टिमेशन ने आर एफ को की वैल्यू जो कैलकुलेशन की है प्रैक्टिकली जो हमारे पास जो हम देख रहे हैं कि पॉलिसी रेट के लिए चल रहा है, उस एवरेज इस एवरेज से में कोई फर्क है। एम में ये वाई और ये डब्ल्यू, ये इसके साथ है, ये इसके साथ है, ये इसके साथ है और ये है। अब जब मॉडरेशन के साथ एक इक्वेशन बनेगी तो ये बनेगी मसलन ए नॉट प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू कर लें डब्ल्यू प्लस ए थ्री एक्स डबल, ये इसकी सही पूरी इक्वेशन बनती है मॉडरेशन। अच्छा, ये आपको ऐसे लगेगा बहुत कोई खौफनाक चीज़ है, आसान इसको समझने का, देखिए इसको समझे है क्या। वाई मालूम करना है। डी वी है, देवी बाकी ये तो सिंपल है ना जो हम यूज कर रहे हैं, ए वन ए टू ए थ्री, असल वेरिएबल है आपके एक्स और डब्ल्यू, ठीक है। ये यहाँ तक ये मॉडरेशन नहीं है, ये सिंपल सिंपल है, ठीक है। बिलोंग। लेकिन जब आपने ये एरो इधर कर दिया तो फिर ये सिर्फ ये जो इक्वेशन है ये क्या बता रही है कि ये इसको इफेक्ट कर रहा है, ये ऐसे भी है एक इक्वेशन। अच्छा, अब ये जो है ये W और X जब आप ये क्रॉस करते हैं, ये मल्टीप्लिकेशन है, मैंने स्टार नहीं लगाया, ये मल्टीप्लिकेशन है। दिस एक्चुअली इज द मॉडरेशन इफेक्ट, ये मॉडरेशन है। जो प्रोडक्ट फॉर्म है ना ये मॉडरेशन को शो करता है, ठीक है। अब इसके अलग अलग इक्वेशन बनाएंगे, तो ये dv है जब m, तो ये आपका है सपोज b नॉट b1x। अभी इसमें एरर टर्म हमने नहीं डाली, μ1 कर लें, इसको μ2 कर लें, ये मीडिएशन की इक्वेशन है, उसके लिए ये dv है। इसी तरह ये इसकी बनेगी y, ये दोनों मीडिएशन बनेगी y इक्वल टू ये इसका ये dv है ये आएगी जी जी ठीक है, इसको c नॉट प्लस c1 m प्लस म्यू
ये 3 इक्वेशन एस्टिमेशन होती है जब आपका सिंपल मॉडल है। ठीक है हमारी एक बच्ची है, उसको समझा थक गए हैं कि इन 3 इक्वेशन को देख के आप कहती हो मेरा PhD हो गया। ये तो आज भी हमने बहुत सारी PhD की, ऐसे नहीं होता। एक सिंपल कॉन्सेप्ट है, जब एक थ्योरी एम्पिरिकल एविडेंस इतनी स्टडीज हो चुकी हैं तो आप कैसे इसको PhD थीसिस बना सकते हैं? एक दो विषय में सर ये जो फर्स्ट लाइन है सर, उसमें जो A2W है सर, ये ऊपर वाले लाइन को शो करता है सर, फर्स्ट पाथ को शो करता है सर। कौन सा? सर ये सर वो जो फर्स्ट लाइन में Equation one जो है, y, y is equal to यस सर, y इज इक्वल हाँ, टू ये हमने नहीं किया ना। सर ये y का डायरेक्ट इफेक्ट भी है ना, वो हमने x के साथ एक्स के साथ डायरेक्ट वो यहाँ भी आ गया ना, कवर हो जाता है। तो बहरहाल ये जब एस्टिमेशन होती है ना तो ये सब के रिजल्ट्स अलग अलग सॉफ्टवेयर निकालता है। ठीक तो हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे इस बार जल्दी हम पहुँच जाए, क्योंकि आज ही अभी हमारे पास है टाइम, हम रिग्रेशन स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है जी सर, yes sir, got it. समझ आ गई? सर ये बताइएगा हाँ। कि इस मॉडल में मीडिएशन का अलग पाथ है और मॉडरेशन अलग वाले relationship में, तो इसको क्या कहते हैं? इसमें मीडिएशन का अलग बात, ये देखा जाए तो इसकी जरूरत नहीं है, लेकिन स्टैटिस्टिकली जब एस्टिमेशन होती है तो सॉफ्टवेयर इसको एस्टिमेट करके बताएगा, वो उसके वो बताना चाहिए प्रोग्रामिंग उसके अंदर है। क्यों? क्योंकि ये जब x का y के ऊपर इफेक्ट है, w का भी तो इफेक्ट है, जो मॉडरेटर होता है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी होता है, इसलिए हमने एरो लगाया। अच्छा ठीक है। ये याद रखना है, जो मॉडरेटर वो आपको यहाँ से भी ये शो हो रहा है, x इंडिपेंडेंट वेरिएबल फॉर y, w इंडिपेंडेंट वेरिएबल फॉर y और क्रॉस प्रोडक्ट ये मॉडरेशन, ये इस एरो को कवर कर रहा है। और ये जो एरो है वो यहाँ से सर ये तो इनडायरेक्ट है सर, एक डायरेक्ट भी बनना चाहिए कि जिसमें सारे x जो IVs है वो हाँ। डायरेक्ट v के ऊपर कर रहे हैं। जी सर वो तो वो मैंने नहीं लिखा, यस वो मैंने नहीं लिखा। ठीक है सर। वो फिर बहुत सारी क्वेश्चन कहीं ऐसा ना हो कि आपका आए ना अभी इसको ये ऐसा ऐसा आपको टॉफी देंगे ना फिर में आप बड़े हैं चॉकलेट